Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome in your English class. Student, today we are going to read ORC book page number 131 of story number 19, Why the Sea is Salty. It was evening when the rich brother got the mill home. Peter said to his wife, "You go out for a walk and I will have dinner ready when you will get home." He put the mill on the kitchen table and said, "Grind herring and broth, and grind them good and fast." So the meal started. When the first dish was full, Peter got another. When all the dishes were full, Peter got a tub. When all tubs were full, the food began to spill on the kitchen floor, and still it kept flowing. Peter twisted and twirled at the mill to get it to stop, but the mill went grinding. In a little while the broth rose so high that Peter was about to drown. शाम का वक्त था जब अमीर भाई मिल को अपने घर लेकर आया। पीटर ने अपनी वाइफ को कहा कि तुम चहलकदमी करके आओ और जब तक तुम वापस आओगी मैं खाना तैयार रखूँगा। उसने मिल को किचन की टेबल पर रखा और कहा कि तुम बड़ी अच्छी सी मछली और बड़ा अच्छा सा सालन तैयार करो, उनको जल्दी से बड़ा अच्छा सा बनाओ। मिल ने अपना काम शुरू किया। पहला बर्तन फुल हो गया तो पीटर दूसरा ले आया। जब वो भी सारी डिशेस फुल हो गई तो पीटर टब लाया और सारे टब जब फुल हो गए तो खाना किचन के फर्श पर फैलने लगा और फैलता गया। पीटर ने चक्की को इधर उधर घुमाया ताकि उसको बंद करने के लिए कोई बटन वगैरह मिल जाए, पर मिल ने अपनी ग्राइंडिंग जारी रखी। थोड़ी ही देर बाद वो सूप इतना जमा हो गया कि पीटर बस उसमें डूबने वाला था। Just in time he managed to get hold of the ledge of the house door and escape. Once out, he ran off down the road with the stream of herring and broth at his heels, roaring like waterfall over the whole farm. Peter ran to his brother's house and begged him to take back the mill immediately. If it rained for much longer, we'll all drown in herring and broth. But John wouldn't agree to take it back till Peter paid him 300 pieces of silver more. So poor John got both the money and the mill. He used the mill to set up farmhouse far finer than his brother's. He even covered it with gold. The The farm lay by the seaside, and the golden house gleamed and glanced far away over the sea. All who sailed by put ashore to see the rich man in the golden house and the wonderful famous mill. उसके घर में इतना सूप और मछलियाँ फैल गई कि उसको बस थोड़ा ही वक्त मिला वहाँ से बच के निकलने का। उसने अपने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बाहर बच के निकला। एक दफ़ा बाहर निकल आया तो वो